Okay, good evening everyone. Let us start with the part 2 of the lecture. Okay, just let me mute you on. Just give me a moment. I will start sharing now. We are now doing, see, there were 2 points left in this slide. We will finish that first. Okay. Yeah. So see students, ये points सब हमारे हो चुके थे. The next one, what was basically left with, I will tell you. Values basically enhance corporate image. See, I have told you students, values, I hope आप लोगों को समझ में आया ही है. Enhance corporate image means what? कोई भी image of a firm. Okay. Enhancing means what? Improving. As I have given you the example of Tata's, yes or no? We all know they are known in the market for giving back to the society. Be it, through Tata Memorial Hospital. I always give you this example. Okay. And same way survival. आप लोग आज के टाइम में अगर देखो स्टूडेंट, सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्म. मतलब इफ आई टॉक अबाउट गेनिंग शेयर होल्डर्स ट्रस्ट. Okay, again these concepts are very important. That is what I mean to tell you students basically. Okay, see, I'll give you some example. Okay, I was talking about corporate image. Textbook में लिखा है, you know, exorbitant prices. मतलब charging a lot of overpricing हम बोलते हैं products के. Making false claims in advertising. Students, when we were doing this marketing and all, advertising का I told you, yes or no, making use of children, या तो बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलना. Okay, creating artificial shortage. मतलब what is the strategy basically? Shortage create करो. क्यों create करो? So that customer जल्दी में आके हमारे product खरीद ले, right? Window dressing in financial statements. Students, do you know the meaning of window dressing? क्या होता है window dressing? I will tell you. एक example दे रही हूँ. विंडो ड्रेसिंग मतलब व्हाट वी लुक एट. सी, इफ यू एवर गो टू मॉल स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, हम नॉर्मली आई ऑल्सो टीच माई स्टूडेंट्स अ सब्जेक्ट नोन एज रिटेल मैनेजमेंट. सो टॉकिंग अबाउट रिटेल मैनेजमेंट, उसमें ये कंसेप्ट आता है. व्हाट नॉर्मली हैपन्स, व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज जो भी होते हैं ना मैनेक्विन स्टैचूज. सी, अगर हम लोग, व्हाई डू वी एंटर अ स्टोर फर्स्ट ऑफ ऑल? अगर हमें बाहर कुछ अच्छा दिखता है, यस और नो, आई मीन, तो व्हाट वी फील कि हाँ इनका कलेक्शन अच्छा होगा. सी, कई बार आई हैव सीन मेनी पीपल व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज कि आप लोग भी केटरिंग में व्हेन वी गो टू अ शॉप एंड ऑल, you normally see when we have something for tasting, it tastes very good. Okay, but then for example हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, they don't give it something of a good quality. That is what I mean by window dressing. Okay, if I tell you next, basically financial statements. If you remember when we were doing ethics in finance, I had told you this, right? What basically happens here is कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स, दे विल पीपल ऑलवेज दे ट्राई टू हाइड द रियल पिक्चर. जो भी है बेसिकली दे वोंट शो अ ट्रू पिक्चर स्टूडेंट्स. व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट कि शेयर होल्डर्स उनका जो पैसा है वापस ले ले. ओके, या नेक्स्ट, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज रिटर्न basically is deceive banks and investors. You all know basically what Vijay Mallya, or for example, if I will tell you, Nirav Modi did. Don't indulge in such type of behavior. Okay? Yeah. Next, okay students, so ये आंसर हमारा हो चुका है. Now I will move to the main answer for the today. Difference between value and ethics. Okay, you have to understand. See, there is a thin line of difference. Okay, but again ये आप लोगों को समझना पड़ेगा. एक अच्छा पीपीटी जो है, सी पीपीटी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लेफ्ट एज यू नो ओनली विथ 3 lectures today, tomorrow and Saturday. So by Saturday I will share all everything with you basically. Okay, everything.
लाइक जो भी फाइनल पीपीटीज एंड ऑल अभी भी मैं ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ टिल व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. सैटरडे जो है आप लोगों को फाइनल मिल जाएगा. सी हैव अ लुक एट दिस पीपीटी. डिफरेंस क्या लिखा है. दिस पीपीटी शॉर्ट एंड स्वीट स्टूडेंट्स. ओके, टेक्स्ट बुक में मेनी पॉइंट्स आर गिवन. इससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा. सी आप देख ही लो. पहले एथिक्स लिखा है, फिर वैल्यूज. एथिक्स देखो, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स स्पेशली द वंस रिलेटिंग टू अ फर्म. मतलब एथिक्स हमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इन जनरल. वैल्यूज क्या बोलते हैं हमें स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल लेवल पे. व्हाई डू वी फील दैट दिस इज राइट, व्हाई डू वी फील दैट दिस इज रॉन्ग. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. एथिक्स आर प्रोफेशनल. मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मीन्स व्हाट, इन जनरल दैट अप्लाइज टू एवरीवन. whereas if you see values, okay, values का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो वैल्यूज आर समथिंग इंडिविजुअल. मैंने आप लोगों को पहले भी कहा स्टूडेंट्स, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो सम पीपल, सी और एक सिंपल डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ. नॉर्मली यू नो व्हेन पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन, ओके, आई हैव सीन सो मेनी. क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ सैटरडे, ओके, मतलब हम लोग को यू नो पास नहीं निकालना है. मे बी सैटरडे के बाद देयर इज अ लॉन्ग वीकेंड कमिंग अप. ओके, सो व्हाट नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि चलो ना एक दिन विदाउट अ टिकट वी विल ट्रैवल. यस और नो, ये सबकी मेंटालिटी होती है स्टूडेंट्स, राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली. सो व्हाट मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, तो सम पीपल व्हाट दे विल डू. हम लोग कई बार देखते हैं ना कि टिकट लेने में लाइन होती है, राइट. सो व्हाट पीपल डू इज यू नो क्या बोलते हैं, अरे छोड़ना, कौन इतनी लाइन में खड़ा रहेगा, उससे अच्छा ऐसे ही ट्रैवल कर लो, कोई टीसी एंड ऑल कोई नहीं होता है. yes or no. Okay, but some people, I mean, they will stand in the line, they will make sure कि you know जो भी है टिकट एंड ऑल they will buy. सो अगेन इसमें मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी हूँ, देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. ओके, इन्फ्लुएंस एथिक्स का देखो, इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंस डिफरेंट प्रोफेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट. यू नो इससे मुझे एक याद आ रहा है स्टूडेंट्स, यू नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, आई नो दे आर सीएस. तो अगर आप देखो उनका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ओके, सी अगेन दे आर हैविंग देयर ओन प्रोफेशनल कोड. अगर आपके कोई फ्रेंड्स है दे आर डूइंग सीएस, you know again if you see they have their own codes. I mean you know क्या बोलते हैं वो लोग बेसिकली कि what is right what is wrong. कि कल कई कई बार you know for example if some CS, अगर if there is scam happening in organizations, कुछ गलत हो रहा है, okay, तो I mean ideally they can take their license also. That is what is being talked over here. Okay, yeah. Next if I will tell you students, लुक एट वैल्यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली. मतलब आपको समझ में आया तो स्टूडेंट्स, एथिक्स इन जनरल आर मेंट फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग उसके लिए अलग. ओके, वैल्यूज ऑन द अदर हैंड आई हैव टोल्ड यू इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली बैकग्राउंड कल्चर रिलीजन कम्युनिटी. यू नो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम विलेजेस. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन कम्युनिटीज अगर होती है, they again have their own way of looking at things. Again एक example दे रही हूँ, you know in some maybe in our community it's a thing कि when we go to someone's house, आप चप्पल हमेशा you know your shoes whatever, even when you go in temples, okay, um, it is a mandatory practice to remove it outside, right? Why? Because हमारे जो धूल है basically dirt dust, it shouldn't come in someone else's house. Okay, yeah. Same way if I will tell you, community, for example, you know some students, I will tell you, some communities आप देखो fast students, again a very important part of our tradition. See, fast रखने का meaning I know Jain people जो होते हैं Jains, they normally you know उनकी 28 and all very strict fast. Okay, continuous almost 8 days 1 month, they are very extreme, they won't have anything. Okay, like
कुछ भी नहीं खाएंगे वो लोग, आई मीन पानी भी नहीं, पानी ऑब्वियसली दे हैव टू ड्रिंक अदरवाइज ही कांट सर्वाइव, यू नो विदाउट फूड वाटर दे सर्वाइव। अब देखो मुस्लिम लोगों का रोजा होता है, आई मीन यू नो अगेन इफ यू सी देयर टाइमिंग्स क्या होता है बेसिकली इन द मॉर्निंग, ओके दे हैव एज मच एज आई डोंट नो एग्जैक्टली बट मैंने जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स थे मॉर्निंग समवेयर 4 बजे से सुबह मॉर्निंग बिफोर 7 they can eat whatever they want, okay some Hindu traditions अगर आप देखते हो नो इन सम हिंदू ट्रेडिशंस फूड में हम बोलते हैं ना कि सिर्फ सूखा खाना खा सकते हैं, ओनली ड्राई फूड वी कैन ईट, ओके समथिंग मतलब अगेन वैल्यूज की बात करूँ तो डिपेंड्स वेयर इन विच कम्युनिटी। मैरिज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स राइट। अब देखो डिफरेंट religions have different way of marrying. Christians normally they go for a church wedding. आपने you know students if you have watched the movie this which one I'm forgetting the name, the one by Amir Khan, PK, yes PK absolutely. It's a very interesting movie. आपको उसमें समझ में आएगा the real life situation. Okay, yeah कि I mean you know what I'm talking about, how different religions they have different way of looking at things। देखो ethics can vary according to professions, मैंने आप लोगों को कहा है vary means they can differ। for example if I will tell you, okay मैं आपको एक simple example दे रही हूँ, see if you are again watching these crime series and all you will be able to relate to these students, okay for example okay um okay एक एग्जांपल दे रही हूँ, you tell me students those who work in the police force and all, see कई बार आप वो अगर देखते हो क्राइम पेट्रोल एंड ऑल व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज यू नो कोई जासूस को लगाते हैं, या तो सी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इफ दे वांट टू एक्सपोज अ ड्रग माफिया, ड्रग गैंग को एक्सपोज करना है, टेल मी वन थिंग अगर कोई यू नो हम बोलते हैं ना फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि हमें अगर घी निकालना हो कहीं से तो हमें हमारी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यस और नो, ओके सीधी उंगली से यू कैन नॉट हैव समथिंग। तो सेम वे स्टूडेंट्स इफ यू टेल मी नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट एफबीआई पुलिस, यू टेल मी अगर वो एकदम सीधा साधा अप्रोच फॉलो करेंगे will they ever be able to catch the criminals? Many a times I have seen police जो होते हैं you know if they want to catch the thieves, okay what they normally do here is you know they dress as normal like you know gangsters के रूप में dress होके जाते हैं and then they will catch someone। so now you tell me students what do you feel ideally वो लोग भी if I you know now talk about Gandhi ji's trusteeship theory, if you will ask me कि मैम कि हमें हमेशा सच बोलना है, बट यू टेल मी स्टूडेंट्स प्रोफेशन की बात हो रही है, सो नाउ यू टेल मी ऐसा अगर इफ समवन इज पुलिस एफबीआई अगर वो लोग एकदम यू नो दे विल फॉलो यू नो एकदम ट्रूथफुलनेस अ वेरी ट्रूथफुल अप्रोच, will they ever be able to catch the criminals? You tell me, I hope you are getting my point what I'm trying to understand। Absolutely, Shivani, right? Thanks for answering. It is never students. See, हम लोग अगर बोलते हैं कि यू नो चोरों को अगर पकड़ना है तो फर्स्ट वी हैव टू एक्ट लाइक दैट। अगर यू नो सीधा अगर हम चोर को बोल रहे हैं कि चलो यू नो आई एम अ पुलिस, वो क्या तुम्हें सच्चाई कभी बोलने वाला है? नेवर, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। वी आल्सो जब भी वो विश्वास आता है यू नो कई बार यू नो अगेन दिस एथिक्स यू नो दिस इज एथिक्स स्टूडेंट्स, इट वर्क्स लाइक दैट। क्या आपको बोला जाता है बेसिकली यू नो कि देर इज अ डिफरेंट वे, कई बार सच बोलने के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़ता है दैट इज एक्सेप्टेबल, ओके या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू values can vary according to individuals, see this you all already know it students, okay what I mean to tell you here is vary means differ according to individuals, ये आप लोगों को पता है, some people might feel this is right, some people might feel this is wrong, we are not here to judge someone, okay हम किसी को जज करने के लिए नहीं है कि आप सही हो आप गलत हो, what the main important thing is कि हर individually how strong how grounded we are, okay मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, I remember कई बार you know what had happened is if you know एग्जांपल दे रही हूँ
कि देयर वाज वन चाइल्ड, ओके, बहुत उसको उसकी मदर के लिए ही हैड टू बेसिकली फाइंड मनी, शी वाज नॉट वेल समथिंग, एंड कुछ उसे जॉब नहीं मिल रहा था, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट हैपेंड इज ही स्टोल द मनी फ्रॉम समवन, किसी से चोरी कर लिया. Now again, see, I am not telling कि चोरी करना is a right thing or wrong thing, but see students, in some situations if I talk about, ideally उसमें आप उसके एंगल से भी look at things. See students, normally if I will tell you, there are judges, okay, in high court or supreme court. Always remember when they give judgments, judge is basically a person, अगर आप देखते हो काफी उनमें they observe many qualities in them, okay, before appointing them. Why ऐसा, why I am telling you this basically is, the main reason being he is someone who's not having a balanced mind. Balanced means if they are not able to look at situation. मैंने आप लोगों को empathy के बारे में कहा था, yes or no, to look at things from others people point, from others point of view, okay, that is very important. Now see students, just this is the last slide, आप लोग just एक बार go through करो, इसके बाद I will show you videos, okay. Basis ये, this is a more detailed slide if I will tell you. Ethics and values, देखो क्या लिखा है, ethics refer to the guidelines for conduct that address question about morality, right. मैंने आप लोगों को ethics के बारे में कहा कि in general जो होता है वो, whereas if you see values, क्या है उसका meaning, ideals that help us in making judgment कि why this is right. See, ethics basically what it teaches us, what is right, what is wrong, why it is right, why it is wrong. Always remember, values teach us. Okay. आगे क्या लिखा है, basis for comparison, what they are. System of moral principles, एक system होता है, yes or no, in general. Values क्या होता है, stimuli for thinking. So see students, for example if I will tell you, okay, अगर and आपके parents in general आपको ethics सिखा रहे, for example if they are telling you कि चोरी करना गलत बात है, for example stealing is a bad thing. So now you tell me, ideally ethics क्या, हमें बस बड़े जैसे क्या बोल देते हैं वो सुनना होता है. Now if you see students, basically talking about values, stimuli for thinking means what, they give us a reason to think. So for example if now there is a child वो उसका brain use करेगा, what he will think is why stealing is wrong. तो उसको समझ में आएगा कि maybe for example if I will tell कि tomorrow if someone steals my toy, how bad he will feel, yes or no. तो same way I mean उसमें खुद की thinking involved होती है, okay, it makes us think students. Values, I was talking about non-veg food and all, अगर आप देखते हो, right. So again why I was telling you about this basically is non-veg food, it enables us to think basically. Means what कि क्यों non-veg नहीं खाना चाहिए, why is the society making such rules, okay. Consistency, यूनिफॉर्म, मैंने आप लोगों को कहा था एथिक्स मतलब जो रूल्स है. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, लास्ट फ्यू लेक्चर्स आई हैड डन इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट, भगवत गीता एंड ऑल, उस पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. उसमें जो कहा है इट इज देयर सिंस इयर्स, ओके, वो एथिक्स हो गया यूनिफॉर्म, इट डजंट चेंज. लुक एट टुडेस टाइम स्टूडेंट्स, वैल्यूज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैंने आप लोगों को कहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, वैल्यू सिस्टम है every day I feed Indians again students Hindu culture. If you see, क्या बोलता है वो कि you should feed cows. Cow is considered a holy animal. But maybe if you see Muslim culture, they are again something. वो लोग कुछ और ही बोलते हैं. Yes or no? मतलब क्या basically कहा है यहाँ पे is कि differs from person. मतलब हर एक की कुछ सोच राय होती है. Okay? Yeah. Ethics tells what is morally correct and incorrect, क्या सही क्या गलत होता है. Values, why, what we want to do or achieve. Okay, see students, ethics आप लोगों को पता है what is right, what is wrong. Values क्या बोलता है, what we want to do or achieve. Now see students, this is again I would नया example दे रही हूँ, a very controversial thing. Okay,
आई डोंट नो एग्जैक्टली, अगर आप वो देखते हो जस्ट रिसेंटली वो सैफ अली खान का, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ promos on Netflix and all. A new series is coming up where you know everyone is competing to be वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, some serial like that, I don't know the exact name. मतलब अगर आप देखते हो राजनीति एंड ऑल, फॉर एग्जांपल यू नो सी देयर विल बी सम पॉलिटिशियंस, दे विल बी लाइक यू नो किसी का नुकसान करके उन्हें खुद आगे आना है, whereas for example there will be someone जो genuinely true path follow करके आए. तांडव, थैंक्स फॉर आंसरिंग शिवानी, एब्सोल्युटली राइट. तो उसमें आप देखते हो कुछ लोगों का जो कैरेक्टर होता है, दे आर लाइक नो मैं सही पाथ. You know students, I will tell you for example, if you have heard of that story, tortoise and rabbit का रेस. आप लोग नॉर्मली उसमें देखो व्हाट हैपेंस इज, सम पीपल का वही फंडा होता है, कुछ लोग जो होते हैं दे वांट टू रन अहेड इन लाइफ, मतलब इवन इफ दे आर फॉलोइंग एन अनएथिकल पाथ, कुछ गलत करना हो, they are you know they don't have any problem with that. And some people they are like tortoise, means what, basically you know slow and steady wins the race. They are like chalo we will follow an ethical path, but even if success comes late, that's okay, right? Yeah. Ethics determine extent of rightness or wrongness of our opinions. See students, this is important. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इफ माई कल्चर इज सेइंग यू नो आप नॉन वेज जो है बेसिकली, नॉन वेज खाना इट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके, यू आर टॉर्चरिंग समवन, हार्मिंग समवन. तो इसका क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स? एथिक्स ने मुझे बता दिया कि माई एक्शन इज रॉन्ग. Okay, now look at values, level of importance. Now you tell me students, even I have seen many Hindus and Jains also. See again मैं आपको example दे रही हूँ, okay, don't take it seriously. Some of them I know they have their own thing. Like for example, see ethics तो हमें बोलते हैं. See आप लोग एक example ले लो students, even if a mother, okay, फॉर एग्जाम्पल इफ शी हैज टू किड्स, उसने दोनों को सेम संस्कार दिए हैं, मतलब शी हैज टॉट बोथ द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल कि नॉन वेज खाना गलत है, stealing someone else's stuff is also a bad thing. But now you tell me students, there will be one child, मैंने आप लोगों को पहले कहा था इवन जो ट्विन्स होते हैं ना, they will never be the same. So what is happening basically is you know एक child है, maybe he is taking mother's every word seriously, but there is one more basically, वो क्या कर रहा है, ओके मॉम ने जो कहा है वो बोला, now following it or not it is my पर्सनल चॉइस, यस और नो. तो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब वही स्टूडेंट्स, तुम उसे कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू नो इससे मुझे एक अच्छा एग्जांपल भी याद आ रहा है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. हैव यू हर्ड ऑफ गांधी जीज, अगेन उसमें क्यों मैं ये बोल रही हूँ, लुक एट गांधी जीज नेचर एंड उनका जो सन था बेसिकली, ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू इज उनका मे बी अपब्रिंगिंग, वैल्यू, यू नो एथिकल बैकग्राउंड सेम ही था. बट इफ आई टॉक अबाउट वैल्यूज, एक जो था इतना सही बोल रहा था, दूसरा जो था यू नो इज सन बेसिकली, वही मैं आपको समझा रही हूँ बेसिकली, यू नो इट टोटली इट इज समथिंग पर्सनल. हम बोलते हैं ना कई बार, अगर इफ यू नो पेरेंट्स टर्न आउट टू बी सोशलाइट्स, ओके, काफी सोसाइटी के लिए करते हैं, बट उनके चिल्ड्रन होते हैं अल्टीमेटली दे आर एंटी सोशल. इट हैपन स्टूडेंट्स, उल्टा भी होता है ना कई बार. फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ थीव्स, चोर होते हैं, जरूरी नहीं है वो लोग भी चोरी करेंगे, कैसे और नो लाइक दैट. Ethics means constraints. Constraints means what students, we know our limits. For example, Hinduism, if I talk about, वो हमें क्या constraint कर देता है कि certain types of food are not allowed, non-veg and all. Jainism, if you see, जो भी you know onion, potatoes, you don't have to. I mean सीमाएं बांध देता है basically. Okay. Values on the other hand motivates. See students, motivates का meaning क्या हो जाता है basically? हम बोलते हैं ना कि सही गलत करना वो हमारे हाथ में है. Now see, if you remember students, I will give you one more example. This I had told you when we had started the lectures. I will tell you क्या था, अगर आप लोगों को वो याद है.
I told you कि for example, if you are going for an exam, assuming the situation is in control, आपकी exam है, you are going somewhere. So what normally happened is, रास्ते पे you saw there is one lady, उसका very bad road accident happened. You have realized कि if you don't take her to the hospital, she will die. बेचारी मर जाएगी. अब क्या हो रहा है, कि if you take her to the hospital, आराम से 1 or 2 hours will go, and you have your exam to give. So for example, there is someone, वो ऐसा सोच रहा है कि चलो, कोई और है वो उसका देखेगा, there will be someone else who is there to look after her. So what they will basically do over here is, वो क्या करेंगे कि let her go. हम क्या करूँ उसमें, हम कुछ लोग होते हैं ना, सीन देख के चले जाएंगे ऐसे, right? And see, there will be some people, students, what they feel is human life is important. About that lady, she, I mean, एग्जाम्स तो ठीक है आते रहते हैं स्टूडेंट्स, इससे भी मुझे आई एम गेटिंग दैट डायलॉग ऑफ थ्री इडियट्स, इफ यू रिमेम्बर, यस और नो, उसमें बेसिकली वो जो भी राजू's फादर वाज इन हॉस्पिटल, तब भी आमिर खान had told this to him कि एग्जाम्स की पढ़ाई उन्हें करनी थी, जस्ट वन नाइट बिफोर द एग्जाम हिज एक्सीडेंट हैपन. So they had told कि लाइफ में एग्जाम्स तो आते रहते, पेरेंट्स लाइफ नेवर कम्स. सी मतलब हमें एथिक्स पता है स्टूडेंट्स की हेल्पिंग समवन इज आवर ड्यूटी, बट अगेन मोटिवेटिंग टू हेल्प समवन वो हमारे वैल्यू सिस्टम हमें बोलते हैं. इट डिफर्स, बट अगर देखो इफ वो चतुर होता, मे बी इन प्लेस ऑफ दिस ही वुड हैव नेवर हेल्प, यस और नो. बट ये लोग का स्पेशली आमिर खान का, इफ यू सी इन दैट मूवी, what was the value system ki help others. So I hope now you have clearly understood the difference between ethics and values. किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई आई फ्रेम्ड योर लेक्चर्स इन सच अ वे. मतलब इन अ वे अगर आप देख रहे हो तो ये जो कंसेप्ट है अभी, ये दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ओनली. इफ यू सी आपके कैसे रिवाइज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर, राइट? हाँ. So have you understood today's lecture, students? Please let me know in the chat box so that in the last 10 minutes that are left, I can show you videos. Please type yes, no, जो भी है. For those of you who have joined new, नए students है, you also tell me, are you comfortable with my teaching style? Because I haven't asked this to you first. समझ में आ रहा है anything that you want me to change? Please ask me. अगेन सेम थिंग आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, कि प्रीवियस मेरे जो लेक्चर्स है, प्लीज आप लोग एक बार यूट्यूब पे देख लो, ओके? एंड बाय टुमारो आप मुझे सी, अभी अगर आपने देखा हो, सी अगेन दोज हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द असाइनमेंट क्वेश्चन, अभी आपको पता ही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इंटरनल एग्जाम्स विल नॉट बी देयर फिजिकली इन कॉलेज, बट ऐसे ऑनलाइन हो रहा है. लाइक आई कैन सी सम टीचर्स हैव गिवन यू गूगल फॉर्म. Okay, whereas some teachers like me, मैंने assignment दी है. I don't want to do Google form now because many of you have already given your assignments, वो जो 6 questions है. Okay, so उसकी जरूरत नहीं है Google form की. That Google form we will keep it for our externals, आपकी जो exam होंगी, right? Internals again, if you see, they are college के हाथ में ही marks होते हैं, right? So on the basis of what you are writing, how much examples you are sharing, I will give you the marks. Okay, so okay, let me do one thing. So आप लोग please कल तक एक बार go through करना. Ask me any questions because Saturday we will be finally winding up, okay, with our concept. So now I am sharing my screen, students. Okay, let me go to YouTube. uh, Ethics and values, let me type it. I think we'll take this video. Let me see, it looks animated. Okay? Looks like a story. Just observe. Okay.
I'll tell you the storyline, okay, what is happening. See, matlab, I will tell you exactly. You know, ये robot है basically. You know, now they are telling, see, कई बार क्या होता है students, मैं आपको एक example दे रही हूँ. See, आप लोग देखो, here they are talking about in general. People like, you know, animals can behave selfishly. But you know, human beings में कुछ अलग होता है students. We have brains of our own. Yes or no? Okay. आप लोग देखो अवर सिस्टम, वो क्या था स्टोरी, वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ही इज गेटिंग अ चांस, यू नो, बेसिकली उसको पैसे मिले. ओके, तो विल ही कीप इट और नॉट अनएथिकली, मतलब उसे मिल रहा है कि, तो रोबोट डजंट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यस और नो. सी स्टूडेंट्स, एथिक्स यही हमें सिखाता है, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. वैल्यूज क्या बोलते हैं कि व्हाई इट इज राइट और रॉन्ग, मैंने आप लोग ये कहा है, ये सब वैल्यूज है. यस और नो. हमारी लाइफ में इन जनरल इफ यू सी गुड की जो साइड होती है, दैट शुड ऑलवेज बी मोर. मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दे आर टेलिंग कि एक लॉन होता है ना, गार्डन साफ करने का, अगर वेज सिस्टम पहले से फिक्स हुआ है कि तुम 6 घंटे का इतना पैसा लोगे, $6 पर आवर, तो तुम काम 4 आवर्स में ही यू आर वाइंडिंग. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो, सिंपल बोल रही हूँ मैं, आपका लेक्चर टाइमिंग इज 7:30 to 9. ओके, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 7 to 8 लेके वाइंड अप कर रही हूँ, and I'm charging for 1.5 hours. That is not ethical on. Okay, that is what is told here. To trust students. I mean, you know, see, अगर ethics when we are not following, trust अगर टूट जाता है. I've told you, a company also. It's very difficult to gain good brand name. Lose करना उतना ही easy है. Okay? वही स्टूडेंट्स की अगेन सही गलत की बात हो रही है. मतलब एथिक्स हमें सिखाता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट वैल्यू सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू, कई बार अगर हम चोरी भी करते हैं ना स्टूडेंट, इट इज टोल्ड, अगर रूम में सीसीटीवी नहीं है, नो वन इज देयर इन द रूम, ऑलवेज रिमेंबर, भगवान का सीसीटीवी कैमरा इज ऑलवेज हैज इट्स आईज ऑन यू. बोलते हैं ना कि किसी को पता नहीं चला. नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. भगवान का हिसाब किताब, बैलेंस शीट इज ऑलवेज क्लियर. See, it might happen, students, कई बार when it comes to friendship and following a right path, we get confused. Okay? मतलब हो क्या हो जाता है, if your friend is asking you to cheat, but you might be confused कि अगर मैंने उसको help नहीं किया, he might fail in the exam. Okay? So again, students, it is a matter of values. What are your choice? Okay? Ask yourself, मतलब he is asking कि you know क्या गलत है. You know students, ethics basically उसका यही होता है students. If I talk about value system especially, ethics हमें सिखाता है, values enables us to think कि why it is good, why it is bad. Okay? मतलब सी स्टूडेंट, वो रोबोट क्या करता है, एवरी टाइम ही इज आस्किंग दिस पर्सन, ओके, कि क्या सही है क्या गलत है, तो अभी वो क्या बोल रहा है, मीन दिस इज जस्ट अ फनी सिचुएशन. ओके, तो फिर अब रोबोट कुछ और पूछ रहा है, मतलब यू नो इज आस्किंग, तो उसने वही उसको बोला कि यू नो नाउ यू यूज ब्रेन ऑफ योर ओन. तो भी तुम्हें जस्ट अ फनी पंच लाइन है, रोबोट का ब्रेन नहीं होता है, इट फंक्शन. तो वही बोला है कि इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस वैल्यूज. ओके, सी दिस इज अ गुड इंडिविजुअल बिलीफ मैंने. ओके,
कल्चर की बात हो रही है, आई हैव टोल्ड यू क्या सही है क्या गलत सिलेक्ट। ओके सी कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े, व्हाई दे हैपन बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके लव ट्रूथ फ्रीडम। ओके आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कंपटीशन है। ओके उसमें कई बार पीपल हैव टेक डिफरेंट पाथ। ओके मैंने आपको तांडव का ही एग्जांपल दिया। ओके डिसीजन मेकिंग ये सब चीज पे। सी स्टूडेंट्स अच्छा एग्जाम्पल का है, कुछ लोगों के लिए हमारे कंट्री का फ्लैग होता है, दे रिस्पेक्ट इट, कुछ लोगों के लिए इट इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। दिस इज नोन एज वैल्यू। इट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स ओवरऑल लोगों का क्या कल्चर होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर सिस्टम्स आर। ओके उसकी बात की गई है। तो सी स्टूडेंट्स आई थिंक नाउ आई विल डू वन थिंग। अभी हमारा जो है लेक्चर टाइम हो गया है। ओके सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। सी स्टूडेंट्स आई कैन सी इफ यू रिमेम्बर ये वीडियो आल्सो वर्क एथिक्स का वर्क इथोस आई हैड डन, आई हैड शोन यू। ओके दोज हु हैव मिस्ड आउट कैन अगेन सी, अच्छा वीडियो था वो, राइट? So आज what we did basically, okay, let me do one thing. Let me first come back to your Zoom meeting. Yeah, today we did two questions, students. Basically, difference between values, ethics के features क्या थे? Sorry, values के and difference. किसी को कुछ भी doubt है? If you have not understood anything, want me to ask? Want me to clarify me? See, कल तक आप मुझे आपके जो भी डाउट्स है बता देना, ओके? सो दैट ऑन सैटरडे व्हेन वी कम, कल भी हमारा लेक्चर होगा ऑब्वियसली। या आई विल टेक अप अ न्यू कंसेप्ट, जो भी अभी रह गया है आई टेक अप दैट ऑन, आई विल टेक इट अप टुमारो। ओके सो नथिंग इज लेफ्ट आउट। इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, अगर आपने देखा हो, ऑलमोस्ट आवर पोर्शन इज डन। Okay, so now let me stop recording.